राष्ट्रीय खबरें हो या अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे की बात, राजनीति से जुड़ा हर पहलू, साथ ही बिजनेस का उतार चढ़ाव, खेल जगत की अपडेट से लेकर मनोरंजन की छोटी बड़ी हलचल, देखिए मिड डे प्राइम। अभिवादये, अहमस्मि गवीश द्विवेदी। अत्र भवतां स्वागतम् एतस्मिन् डीडी न्यूज़ वार्ता प्रसारणे। आदौ प्रमुखवार्ताः। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अद्य अर्थसङ्कल्पप्रस्तुतेः परम् आयोज्यमानेषु 3 उपवेशनेषु दृश्यश्रव्यमाध्यमेन कुर्यात् सहभागिताम्। MSME अर्थात् सूक्ष्मलघुमध्यमोद्यमक्षेत्रैः सम्बद्धानि स्युः एतानि उपवेशनानि। विदेशमन्त्रिणः डॉक्टर एस जयशङ्करस्य ब्रिटेन आयर्लैंड देशयोः प्रवासः अद्य प्रभृति। स्वीयसमकक्षीयैः सह द्विपक्षीयसम्बन्धेषु कुर्यात् असौ वार्ताम्। भारतेन संयुक्तराष्ट्रमानवाधिकारप्रमुखस्य जम्मूकश्मीरमणिपुरौ आश्रित्य विहितां टिप्पणी प्रतिपादिता निराधारा। उक्तं यत् टिप्पण्यः यथार्थतः सन्ति बहुदूरम्। कैनेडा मैक्सिको देशयोः अद्य प्रभृति आरभेत वाणिज्यिककरः। ट्रम्प इत्यसौ उक्तवान् अत्र विलम्बस्य नास्ति कथमपि अवकाशः। उत्तर अमेरिका महाद्वीपे वाणिज्यिककरसङ्घर्षस्थितेः अस्ति आशंका। चैम्पियन्स् ट्रॉफी इत्येतस्याः क्रिकेट् प्रतियोगितायाः प्रथमा उपान्त्यचक्रीया स्पर्धा अद्य। भारत ऑस्ट्रेलिया दले दुबई इत्यत्र कुर्यातां क्रीडा साम्मुख्यम्। अपराह्ने 2:30 आरभेत स्पर्धा। अथ वार्ताः विस्तरेण। गतदिने विश्व वन्यजीव दिवसावसरे प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी गुजरात राज्यस्य सासणगिर इत्यत्र अगच्छत्। प्रधानमन्त्री तत्र गिर राष्ट्रियोद्यानस्य भ्रमणं कृतवान्। एतत् उद्यानं वस्तुतः एशियावर्तिसिंहानां गृहमुच्यते। अवलोकयन्तु एतदवसरे प्रकाशितं चलच्चित्रम् एतत्। तत्रैव प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी राष्ट्रीय वन्यजीवमण्डलस्य 7क्रमिकस्य उपवेशनस्य अध्यक्षतां कृतवान्। गुजरात राज्यस्य सासणगिर इत्यत्र ह्यः समनुष्ठिते उपवेशने केन्द्रीयपर्यावरणमन्त्रिणा सह शीर्षाधिकारिणः अन्ये हितधारकाः च सम्मिलिताः अभवन्। उपवेशने वन्यजीवसंरक्षणेन सम्बद्धप्रयासेषु विचारादिकं जातम्। प्रधानमन्त्री एतस्मिन् विषये महत्त्वपूर्णपरामर्शान् अपि प्रदत्तवान्। असौ वन्यजीव नेशनल रेफरल सेंटर जूनागढ़ इत्यस्य आधारशिलाम् अपि तत्र स्थापितवान्। षोडश्याः एशियावर्तिसिंहानां गणनायाः अपि असौ शुभारम्भं कृतवान्। प्रधानमन्त्री मानव वन्यजीवसङ्घर्षप्रबन्धनार्थं कोयम्बटूर इत्यत्र उत्कृष्टताकेन्द्रस्य स्थापनापरम् उद्घोषणाम् अपि कृतवान्। सहैव प्रधानमन्त्री भारते रिवर डॉल्फिन इत्येतासां संख्यासम्बद्धां सूचीमपि प्रकाशितवान्। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अद्य अपराह्णे प्रायः 12:30 दृश्यश्रव्यमाध्यमेन अर्थसङ्कल्पप्रस्तुतेः परम् आयोज्यमानेषु 3 उपवेशनेषु सहभागितां कुर्यात्। एतानि उपवेशनानि MSME अर्थात् सूक्ष्मलघुमध्यमोद्यमक्षेत्रेषु विकासगतिवर्धनाय, विनिर्माणार्थं, निर्यातार्थं, परमाणूर्जाभियानार्थम् अथ तत्सम्बद्धपरिष्कारार्थं च आयोज्यमानानि सन्ति। उपवेशनावधौ कार्यक्रमे उपस्थितान् जनान् अपि प्रधानमन्त्री सम्बोधयेत्। केन्द्रीय गृह सहकारिता मंत्री अमित शाह गोवा राज्ये प्रवर्तितानां
नूतनापराधविधीनां स्थितेः समीक्षोपवेशनं विहितवान्। अत्र समुपवेशने गोवाराज्यस्य मुख्यमन्त्री डॉक्टर प्रमोद सावंत इत्यसौ अपि उपस्थितः आसीत्। एतस्मिन् हि समुपवेशने आरक्षिकारागारन्यायालयादिभिः सम्बद्धानां नूतनविधीनां प्रवर्तनेन सह वर्तमानस्थितेः अपि समीक्षा जाता। विदेशमन्त्री डॉक्टर एस जयशंकरः अद्य प्रभृति ब्रिटेन आयर्लैंड देशयोः प्रवासे भवेत्। विदेशमन्त्री अद्य एतत् प्रवासस्य प्रथमे चरणे ब्रिटेन देशं प्रति गच्छति। विदेशमन्त्री स्वसमकक्षेण तत्रत्येन विदेशसचिवेन डेविड लेमी इत्येतेन सह चर्चां विधाय अनेक गणमान्यजनैः सह भारतीयसमुदायसदस्यैः सह अपि मेलनं कुर्यात्। ततः स्वप्रवासस्य द्वितीये चरणे असौ परश्वः आयर्लैंड देशं सम्प्राप्य स्वसमकक्षेण साइमन हैरिस इत्येतेन सह देशद्वयगतेषु सम्बन्धेषु अपि चर्चां कुर्यात्। वस्तुतः विदेशमन्त्रिणः प्रवासः एषः ब्रिटेन आयर्लैंड देशाभ्यां सह भारतस्य मैत्रीपूर्णसम्बन्धम् इतोपि नवगतिं प्रदद्यात् इति। उत्तरप्रदेशस्य पर्यटन संस्कृति विभागान्तर्गतम् अयोध्यास्थेन वैदिकशोधसंस्थानेन आयोजितस्य द्विदिवसीयस्य अन्ताराष्ट्रिय रामायण कॉन्क्लेव इत्यस्य कार्यक्रमस्य भव्यम् अनुष्ठानम् अभवत्। रामायण कॉन्क्लेव कार्यक्रमस्य आयोजनं राष्ट्रिय रामायण मेला परिसरे चित्रकूट इत्यत्र समजायत। कार्यक्रमस्य शुभारम्भं भाजपादलस्य भूतपूर्वसांसदः भैरवप्रसादमिश्रः मदनदासमहाराजः च कृतवन्तौ। अत्र कार्यक्रमे संस्कृतविद्यार्थिभ्यः श्रीरामचरिताधृतायाः प्रश्नोत्तरीस्पर्धायाः आयोजनं कृतं गतम्। विजयश्रियम् अवाप्तानां विद्यार्थिनां च तत्र सम्माननं जातम्। उद्घाटनसत्रे पूर्वसांसदः भैरवप्रसादमिश्रः जन जन के राम इत्येतं विषयम् अवलम्ब्य अत्यन्तं सारगर्भितम् उद्बोधनम् अकरोत्। श्रीरामस्य माहात्म्यम् असौ भृशं प्रकीर्तितवान्। अन्ताराष्ट्रिय रामायण कॉन्क्लेव इत्येतस्याः धार्मिकयात्रायाः आरम्भः तावत् प्रयागराजस्थितात् शृङ्गवेरपुरतः अभवत्। एषा यात्रा रामवनगमनपथम् अनुसरन्ती श्रीलङ्कां यावत् प्रवर्तेत। एतेन आयोजनेन भगवतः श्रीरामस्य सामाजिकसनातनमूल्यानि प्रतिजनं प्राप्नुयुः इति। ये रामायण अयोध्या के द्वारा इधर पूरे देश में ऐसे कार्यक्रम किए जाते हैं। इस बार ये राष्ट्रीय रामायण मेला के मंच से इन्होंने अपने को समाहित किया है और राष्ट्रीय रामायण मेला समिति का जो कार्यक्रम महोत्सव हो रहा है उसमें इन्होंने जोड़ करके कार्यक्रम किया है। निश्चित तौर से एक अच्छे कार्यक्रम हो रहे हैं और रामायण मेला और ये दोनों मिल करके एक अच्छा लोगों को कार्यक्रम दे करके आनंद देने का काम कर रहे हैं। थीम है वो ये है कि जो राम वनगमन पथ है उस पथ पर श्रृंगवेरपुर से लेकर और चित्रकूट और आगे किष्किंधा और महाराष्ट्र होते हुए जिस पथ से भगवान राम गए थे उस पथ पर एक सांस्कृतिक कार्यक्रम के आयोजन की योजना संस्कृति विभाग के द्वारा है। संस्कृति विभाग के ही अंतर्गत है। पहले उसे अयोध्या शोध संस्थान कहते थे, वो अंतर्राष्ट्रीय रामायण एवं वैदिक शोध संस्थान के नाम से जाना जाता है। तो इस आयोजन का सिर्फ एक उद्देश्य है कि भगवान राम की जो संस्कृति है, जो सनातन संस्कृति है, उसमें भगवान राम ने किस तरह से कुल, भील, गरीब और सबके साथ मिलकर पशु पक्षी, पर्यावरण, प्रकृति के साथ कैसा सामंजस्य भगवान राम का था। दिल्ल्याम् ऐषमः द्वितीय वैश्विक विदुषी सम्मेलनस्य आयोजनार्थं वैश्विक संस्कृतमञ्चः सिद्धः अस्ति। मार्च मासस्य 20 दिनाङ्कतः 21 दिनाङ्कं यावत् एतत् वैश्विक विदुषी सम्मेलनं प्रवर्तेत। ऐषमः सम्मेलनस्य विषयः अस्ति भारतीयज्ञानपरम्परायाः संवर्धने वैदिककालिकीनां वैदिकोत्तरकालिकीनां च विदुषीणां भूमिका। एतेन मुख्यविषयेण सह तावत् 18 संख्याकाः उपविषयाः अपि प्रदत्ताः सन्ति। सम्मेलने याः अपि शोधपत्रवाचनं काङ्क्षन्ते ताः ग्लोबल संस्कृत forum.org इत्यत्र किंवा ग्लोबल विदुषी conference@gmail.com इत्यत्र सम्पर्कं कर्तुं शक्नुवन्ति। अथ वैश्विक संस्कृत मंचस्य डॉक्टर वरदा वसा इत्येषा सम्मेलनविषये ख्यापयन्ती सम्मेलने सहभागितायै निमन्त्रणं कृतवती। द्वितीय वैश्विक विदुषी सम्मेलनं देहली विश्वविद्यालयेन संलग्नेन
भारतीमहाविद्यालयेन एवं मातासुन्दरी महाविद्यालयेन तथा वैश्विकसंस्कृतमञ्च देहल्याः संयुक्ततत्त्वावधानेन मार्च् मासस्य 20 एवं 21 दिनाङ्कयोः भविष्यति। इदं सम्मेलनं संयोजित-असंयोजितमाध्यमेन भविष्यति। अस्मिन् सम्मेलने 3,000-अधिकानां भारतीयानाम् एवं वैदेशिकानां विदुषीणां मेलनं भविष्यति। अनेन ज्ञानपूर्णसम्मेलनेन प्रवर्तमानभारतीयज्ञानपरम्परा एकां नूतनां दिशां प्राप्स्यते। अस्मिन् सम्मेलने वैश्विकसंस्कृतमञ्चपक्षतः भवतां सर्वेषां हार्दिकं स्वागतं करोमि। IMF इत्येतस्य अर्थात् अन्ताराष्ट्रियमुद्राकोषस्य पक्षतः भारतार्थं शुभा सूचना अस्ति। अन्ताराष्ट्रियमुद्राकोषस्य कार्यकारिणी मण्डलेन भारतस्य विवेकपूर्णनीतीनां प्रशंसा कृता अस्ति। सहैव एतस्य कार्यकारिमण्डलीयनिदेशकानुसारेण 47-अधिक-2000तमवर्षपर्यन्तं भारतं विकसितार्थव्यवस्थायुतं राष्ट्रं भवेत्। तदर्थम् आश्रीयमाणानां महत्त्वपूर्णार्थिकपरिष्काराणां प्रशंसा जायते। वस्तुतः अन्ताराष्ट्रियमुद्राकोषस्य पक्षतः प्रतिवेदनमेकं प्रकाशितं, यत्र भारतस्य सुदृढम् आर्थिकं प्रदर्शनं 47-अधिक-2000तमवर्षपर्यन्तं विकसितार्थव्यवस्थास्वरूपप्रापणे आवश्यकपरिष्कारकार्यैः सह सर्वथा सहायकं सिद्ध्येत् इति सबलं सम्भावितम् अस्ति। चैम्पियन्स् ट्रॉफी इत्येतस्यां क्रिकेट् प्रतियोगितायां भारत ऑस्ट्रेलिया दलयोः मध्ये प्रथमा उपान्त्यचक्रीया स्पर्धा अद्य क्रीड्येत। ध्यातव्यमस्ति यत् स्वीयान्तिमस्पर्धायां भारतेन ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड दलं पराभूय प्रथमे समूहे स्वकीयं शीर्षस्थानं सुनिश्चितमासीत्। अथ द्वितीयसमूहे ऑस्ट्रेलिया दलं द्वितीयस्थाने आसीत्। अतः द्वयोः दलयोः मध्ये अद्यतनी प्रथमा उपान्त्यचक्रीया स्पर्धा दुबई क्रिकेट क्रीडाङ्गणे जायेत। द्वितीया उपान्त्यचक्रीया स्पर्धा तावत् दक्षिणाफ्रीका न्यूजीलैंड दलयोः मिथः श्वः इत्यपि सहैव स्मर्तव्यम्। ततः मार्च मासस्य 9 दिनाङ्के चैम्पियन्स् ट्रॉफी इत्येतस्याः क्रिकेट् प्रतियोगितायाः निर्णायिका स्पर्धा भवेत्, यदर्थं भारतीयं दलम् ऑस्ट्रेलिया दलं पराजेतुं सर्वात्मना यतेत। एतत् हि वार्तासंस्करणम् अधुना सम्पद्यते। अभिनवाभिः वार्ताभिः सह पुनः उपस्थास्यामः। तावन्मङ्गलं भूयात्। उत्तर से दक्षिण तक, पूर्व से पश्चिम तक, देश हो या दुनिया की खबर है तो पड़ताल जरूरी है। देखिए